Okay, so I'm going to start electromagnetic theory. And I will discuss this whole electromagnetic theory in first part will be your electrostatics. Electrostatics. Second part will be magnetostatics. So you should also see this whole topic in these blocks. Even if you see paper which was just we had before I think 15 days, if you say paper of NET, JEST or TFR, you will find that questions are there from this block, then this block, and then third one is Maxwell's equations. Maxwell's equations. Okay? Then fourth will be electromagnetic waves. So this will be the syllabus of NET exam, JAM, JEST, TIFR, and see after electromagnetic wave you will have fifth part, which is anybody can tell? No, waveguide. Because you have electromagnetic wave, then electromagnetic wave propagating in a medium. Rectangular, cylindrical, okay? Waveguide. Especially TE, TM modes, okay? Then sixth part will be radiation. So in between there will be gauge transformations and all, but that is actually that is to prepare you for radiation. तो इसलिए I am not writing that because वो एक तरीके से क्या हो गया कि whatever you need for radiation is taught in that chapter. Okay, so I am directly writing radiation. Radiation. And elementary plasma I will try to introduce this time because now they are touching questions from there. So you, even though बहुत ही basic question आ रहा है, but at least plasma oscillation, plasma, some very fundamental waves, so little bit we should know. और वहाँ पे question करना बहुत आसान हो जाता है because अभी जिस topic से question नहीं आ रहा है, when they start from very, very elementary questions. Okay, so this is the outline of the syllabus. So why I have written this? Because after this is not for IIT JAM. Okay, so some students have joined online. IIT JAM students, कोई बताओ जरा? Hello? Yes. So please कॉपी में ये मार्क बना लेना कि जैसे जब तुम्हारा एग्जाम जैम का आ गया, बट ये जेस्ट TIFR वगैरह में कॉमन है. ओके,
So this will be for NET, JEST, TIFR. In this you have common syllabus, but just if you are appearing for IIT JAM, so you have to discuss things up to this level. Okay? What books I will follow. So you all know this is a sign of mature topic, जो कि एकदम electromagnetic theory is one of the topics. There is no confusion how to teach. There is no confusion which chapter should come first. Unlike statistical mechanics, unlike quantum mechanics, where teacher has to put little effort कि जिसमें कौन सी चीज़ पहले पढ़ाएं, कौन सी बाद में पढ़ाएं, there is little bit confusion about it. Okay? मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आपको पता है ना कौन सा चैप्टर पहले करना है कौन सा बाद में, that can be decided by a teacher. But electromagnetic theory is such a branch which inspires all other branches. कि things should be so symmetrical and so well placed that all other branches take inspiration from this. Okay? So इसलिए इसमें कोई इसके फ्लो में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इसीलिए बुक्स भी हायर लेवल पे जेडी जैक्सन होती है. ऑल बुक्स दोज आर रिटन, दे गिव रेफरेंस फ्रॉम जेडी जैक्सन, एंड इफ यू सी जेडी जैक्सन it will have references from original papers. Okay? So that is original textbook, but we don't follow that for this particular exam. We follow Griffiths, which is a better textbook for this exam. So you should have, in my view, a hard copy of this book. और थोड़ा बहुत कुछ कुछ important topics हैं, you should always refer to the textbook. Soft copy is already there. If you will see your my Google Drive in your WhatsApp group, but you should have hard copy. So, and another book that I like is a book by Hayat, and in electromagnetic theory is studied by electrical engineers also. So in that space, this is very famous book. Okay? So कुछ topics जो हैं वो इसमें बहुत अच्छे से दें. इसकी भी soft copy I have put in the drive, so you can also see this. Okay? So but most of the time, this will be a very nice book for this course. I take many problems from Erudov. So for problems, some excellent problems are given in Erudov. So वो मैं वहाँ से लेता हूँ आपको कराने के लिए. So these will be 3 books which will be using. Okay? अब what is prerequisite? यानी कि EMT पढ़ने के लिए आपको क्या पहले से पता होना चाहिए. तो prerequisite, some people will tell you that vector calculus you should know, little bit of vector calculus, but I teach vector calculus in mathematical physics separately. मेरा ये मानना है कि for electromagnetic theory जो भी situation arise होती है, whatever situation arises in which you have to apply some vector calculus, that should be cleared there itself. अगर आपने maths में पढ़ा भी है तो वो connection quickly it is difficult to make those connections. Like you have done separately what is dot product, what is cross product, what is divergence, curl, gradient, then Stokes theorem, then Gauss divergence theorem. But until unless you don't use it in electric field, magnetic field, vector potentials, तब तक वो बात कनेक्शन बनता नहीं है. तो हम लोग ये वाले मेथड को यूज करेंगे. वेक्टर भी पढ़ेंगे सेपरेटली, वी विल डू वेक्टर्स, बट अभी के लिए whatever will be required I will tell you immediately there.
तो इस तरीके से बहुत बार many times you will visit to the concept of vector calculus. Okay, vector calculus. कुछ ही फॉर्मूले हैं जो बार बार यूज होते हैं. Only few concepts are there that are repeated. बार बार we will use. और वो जो है वो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार अपीयर हुआ तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मैं बताऊं, बट इफ इट अपीयर सेकेंड टाइम तो फिर आपको ध्यान रखना है कि भाई वो आ चुका है. थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड मैनी टाइम्स इट विल अपीयर. All the formulas are whatever is taught in electrostat is again repeated in magnetostat because the concepts are so similar. तो इसलिए वो दो बार रिपीट हो जाते हैं, उसके बाद भी आगे भी रिपीट होते रहते हैं. ठीक है, सम पार्ट यू यूज इन क्लासिकल मैकेनिक्स ऑल्सो. सो दिस इज द आउटलाइन. सो आई वॉन्टेड टू जस्ट शो यू समथिंग. सो जस्ट अ सेकेंड. So little bit of पूरा ही आ गया. Okay. Little bit of vector is needed, and I told you that I will teach you again also, but just to give you a context. This is your syllabus. First of all, see this. Okay. I don't want to take name of complete syllabus because उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है. Bits and pieces में, for example, you see it starts electrostatics, it ends here. It starts magnetostatics, then magnetostatics ends here. Then this is electromagnetic induction and all I teach in Maxwell's relations. Okay? And then comes electromagnetic waves in different mediums, its reflection, refraction, polarization, Fresnel's law, interference, coherence, diffraction. This all is in electromagnetic wave. Then dynamics of charge particle in static uniform electromagnetic field. That means if a charge is kept in electric field and magnetic field, you have to write equation of motion, और उसके थ्रू आपको देखना है उस चार्ज का मोशन कैसा होगा. ठीक है. In advanced part, dispersion relations in plasma. So since they have given in the syllabus, तो जब भी किसी को पेपर बनाने को बोला जाएगा कि भाई ये there is this part and then there is advanced part. So some questions obviously you will take it from here, na? So you have dispersion relation in plasma. So at least few things we should know. So that I will teach. Then Lorentz invariance of Maxwell's equation. This topic Atul sir will teach you. Okay, because it is related to little bit of STR and all is involved. So ये particular सिर्फ topic, only this topic. Then transmission lines and wave guides, ये बहुत ही important है. इस बार भी question आया था wave guide से. This I will discuss. And then radiation finally. Okay, तो ये सोचो कि even if you cover this much and if you don't do this, you are missing at least 3 questions. और वो भी सारे एडवांस पार्ट में सारे सी में जाते हैं, 5 मार्कर. ओके, ठीक है. तो ये which will be covering. And for JAM only up to electromagnetic wave, it is there in the syllabus. Okay, this is one thing that I wanted to tell you. Then अगर मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, तो you have 3 coordinate systems which are important for your this course. So first is rectangular coordinate system, which is also known as Cartesian coordinate system.
सेकेंड इज सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, जिसको भी पहले आप ले लो, एंड देन यू हैव स्फेरिकल। तो जितने चीजों का यूज होता है वो देखोगे आप कि आपको ऑलरेडी पता है। सो you know Cartesian is x y z perpendicular axes. This is known as x is equal to 0 plane, this is known as y is equal to 0 plane, this is known as z is equal to 0 plane. तीन प्लेन जहां कट करते हैं that is known as origin. Three planes, so that three planes, that planes may have curvature also. You will see in cylindrical and spherical polar. So ये तो बिल्कुल planes है ना। एंड नाउ जो यूज होता है दैट इज ओनली टू थिंग्स, वॉल्यूम एंड एरिया। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या होगा कि समथिंग इज स्प्रेड इन द वॉल्यूम, सो आई नीड वॉल्यूम एलिमेंट, समथिंग इज स्प्रेड ऑन द एरिया, सो आई नीड एरिया एलिमेंट। सो प्लीज सी दिस, व्हाट इज स्मॉल वॉल्यूम? दिस क्यूब। So this small length is dx dy dz, so obviously small volume is dx dy dz. And area, ऊपर वाला एरिया देखो dx dy, and it is direction is z cap. This area dx dz and direction is y cap. सो इस तरीके से एरिया का भी हमें यूज करना पड़ेगा, दैट्स वाई आई हैव रिटन dx dy. आई विल टेल यू, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी आई विल टेल यू अगेन. सो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल थिंग which we already know, just to revise. And this is cylindrical coordinate system. Okay? Online students, it is visible properly? Yes, sir. Okay. Yes. Okay, very good. So this is cylindrical coordinate system. In cylindrical coordinate system, three planes which intersect is, one plane you can see is this, that is known as phi is equal to constant plane, and one plane is this z is equal to a constant plane, and one plane is that curvature of a sphere. All these three intersect, that is point P. In Cartesian, three planes intersect, that is point P. Now here three different kind of planes intersect. So this I will teach you in detail in vector calculus. EMT में मुझे क्या चाहिए, बस यहाँ पे देख लो. How to write small area and how to write small volume. So a small volume is this. This small volume is rho d rho d phi dz. This small volume is, you can see, this height is dz, this length is d rho. So height हो गया, length हो गया, and then this is rho d phi, because angle is equal to arc upon radius. So this, so तीनों को मल्टीप्लाई करके तुम कोई भी एरिया निकाल सकते हो. So सिर्फ ये वाला एरिया सीख लो, बाहर वाला. This one, what is this area? Rho d phi dz. Okay, and what is volume? Rho d rho d phi dz. So only this area you should know, and total volume you should know. This will be used again and again. Okay, is it clear? ठीक है. And this is cylindrical coordinate. In cylindrical coordinate, this is point P. You draw a perpendicular on this xy plane. So this is z. Okay? And in xy plane, अगर इस पे perpendicular डाल दो और इस पे perpendicular डाल दो, so this distance is x, this distance is y. It is shown on the upper plane. So ये this is rho. तो इस रो को यहां बना लिया, एंड देन यू कैन सी दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज Z एंड दिस इज रो.
on the xy plane. इस रो को यहां बना लिया, दिस इज रो, नाउ दिस इज रो cos phi and this is रो sin phi, so that is equal to x and that is equal to y. Is that okay? ठीक है, आर भी ले सकते हो, बट यहां पे मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, जस्ट टू डिफरेंशिएट. ओके, कैसे? Okay, so now there will be a list of formulas that I will already give you. इसमें कुछ बहुत वेक्टर में मैं इसको सारा डिराइव करके भी दिखाऊंगा, बट आप देखोगे कि some of them will be used slowly and slowly we will start using them. For example, formulas of gradient, divergence, curl, Laplacian in all coordinate system, in Cartesian, in spherical polar, in cylindrical. So why I am not going into the detail, because जहां पे भी ये आएगा उसको हम दोबारा से बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है. ठीक है, तो अगर आप ये एक लिस्ट अपने पास रख लो, जो कि मैं आपको भेज दूंगा. मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि इसको अपनी कॉपी में लिख लो या पेस्ट कर लो. जैसे जैसे द फॉर्मूलेज स्टार्ट कमिंग, उसको आप टिक करते जाओ कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, और फिर धीरे 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 करके एवरीबडी रिमेंबर. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ये भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में सेम, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन. आप बाद में देखोगे कि ये सब बहुत ज्यादा यूज होने वाला है. ओके, एंड दिस इज इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल फॉर्मूलेज. ठीक है ना, तो ये जितना जितना यूज होगा उतना उतना ही हम अपने मेमोरी में धीरे धीरे करके रखते जाएंगे. एंड दिस विल बी सम वेक्टर फॉर्मूलेज. तो इसकी पूरी लिस्ट है, बट आप सिर्फ उसी को टिक करोगे जो आपके काम आ रही है. तो धीरे धीरे करके यू विल सी कि ओनली फ्यू फॉर्मूलेज आर देयर विच आर नेसेसरी. ठीक है, बट आई हैव गिवन कंप्लीट लिस्ट. आई हैव टेकन इट फ्रॉम ग्रिफिथ. And these are the formulas, and then three theorems that I will continuously use wherever required. First is your gradient theorem, then divergence theorem, and then Curl theorem. So this is also known as Gauss theorem and this is also known as Stokes theorem. ठीक है, so अभी इस पे आप ध्यान मत दो. जहां पे भी इसका एप्लीकेशन आएगा, जहां भी यूज आएगा, हम इसको दोबारा से यूज करेंगे. ठीक है, बट आई विल सेंड यू दिस सो दैट कि यू जस्ट कहीं पे भी आप इसको जस्ट अपनी कॉपी में नोट कर लेना. एंड देन जैसे जैसे उसका यूज आता जाएगा, जस्ट पुट अ टिक मार्क ऑन दैट एंड देन यू विल रियलाइज कि कुछ ही फॉर्मूले हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं. ओके, एंड पहले से कोई बहुत ज्यादा दिमाग में ये मत रखो कि वेक्टर बहुत ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट. क्योंकि वेक्टर कैलकुलस तो अपने आप में भी बहुत ज्यादा है, बट ईएमटी में जो यूज हो रहा है उसको ध्यान से देखो कि कितना हमें जरूरत है. जहां पे भी जो रिक्वायर्ड है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए. वॉट एवर इज रिक्वायर्ड दैट मच यू मस्ट नो. ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट. All right. So now let us start. The first part, that is electrostatics. So electrostatics you can see here, और आप ये क्लास 12th से भी जानते हो, सब लोगों ने पढ़ रखा है. ओके, see in this case always our charge will be static. That means it will be at rest. Charge will be static. So there is a beautiful concept given in Griffith that
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज आवर टास्क, एंड दैट इज गिवन बाय कि सपोज, आप लोग ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सपोज आई हैव सम बंच ऑफ चार्जेस and they are stationary, and I want to calculate electric field and electric potential. That is known as electrostatics. Suppose these charges start moving, then you have current, and because of the current you have magnetic field. So as till the point the current is steady, that means current is not a function of time, it is called magnetostatics. Okay, so electrostatics is charge will be static, magnetostatics is current is steady current. Okay, charge is moving but the current produced is steady, and if I take these bunch of charges and I just randomly shake, it will get accelerated, and then you have radiation. So only 3 steps are there. First is you have charge at rest, you have electric field, you have, then second is charge starts moving, you have steady current. Words are very important और उनकी meaning भी बहुत important है. Then you have magnetic field, but that is called magnetostatics. So what is static there? Steady current. Charge is static, then how current will produce? अच्छा, तो तुम मुंह से वो तो हटा दो. अरे कोई बात नहीं. Okay, so if you just take and shake it in random direction, it will get accelerated and electromagnetic field. So that for this all three these things we are doing whole lot of mathematics. Okay, so ultimately is to understand radiation, because special case of radiation, अगर radiation की बड़ी सी equation में मैं कुछ कुछ put कर दूं, it will give you Coulomb's field also. कुछ कुछ put कर दूं, it will give Biot-Savart's law field also. और सब कुछ छोड़ दूं, तो it will give, if I leave everything, I don't put any approximation, then it will give radiation. Okay? So ultimate aim is that. So electrostatics is just what? Charge is your steady, and first thing that you want to study is electric field. Because of a charge. Okay? So आपको पता है कि when you have two charges, Q1 and Q2, इनके बीच में आपस में क्या हो सकता है? Q1 Q2 greater than 0, then it will have repulsion, and Q1 Q2 less than 0, then you have attraction. Okay, so that means दोनों के बीच में कोई force of attraction या repulsion है, ठीक है ना? And that is given by Coulomb's law. उसको कौन बताता है? Coulomb's law. And what is Coulomb's law? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. This is Coulomb's law. Correct? And if you put a vector, then it will become, because force is a vector quantity, so it should become a vector quantity. तो अभी इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, जहां पे भी सिचुएशन जैसी आएगी हम लोग उसको हैंडल कर लेंगे.
Okay? So just write it like this. This is Coulomb's law. Now, suppose there is a charge Q and you have another charge small q and this is distance r. So if I write force, it will be 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. I want to understand this charge and I don't want to be dependent on this charge. Then I write a property which is called electric field. So electric field की खासियत क्या है? It is a vector field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर फील्ड है. इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज वेक्टर फील्ड बिकॉज इट टेल्स यू द प्रॉपर्टी अराउंड द रीजन. ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो उतनी है जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में साई की इंपॉर्टेंस है. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं तो वी नो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जैसे कि हम साई जानते हैं तो वी नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग. और जो साई का इंस्पिरेशन है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड. कि we may have some vector field which can tell me the complete information of the system. So similarly there you have psi. Okay, so the inspiration has been this always. Okay, so this is a vector field and you can see if I want to know the property around this region, I can write electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. So this is the electric field which will tell you the property of the region around plus q. और इसको डिफाइन कैसे कर दिया मैंने? इसको डिफाइन कर दिया f by q नॉट से. q नॉट को मैंने q को मैंने डिवाइड कर दिया है. जस्ट लेट अस टेक इट q नॉट जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ टेस्ट चार्ज. इसको क्या बोल देते हैं? टेस्ट चार्ज. अब मुझे दूसरे चार्ज की जरूरत नहीं है. प्रॉपर्टी बताने के लिए मुझे मेरे चार्ज या चार्ज सिस्टम की ही जरूरत है. और बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इफ देयर आर मैनी चार्जेस q1 q2 q3 q4, there are many charges. So what will be the field at this point? Ri due to a charge qi. This is point P. So I can write here the field is given by summation ei vector because it is a vector quantity. So just आपको क्या कर देना है? You have to sum electric fields due to all the charges. और इसको क्या कहते हैं? This is called superposition principle. Superposition principle. So we are lucky that electric field follows superposition principle. जब आप एक की वजह से फील्ड निकाल रहे हो तो दूसरा कोई डिस्टरबेंस कॉज नहीं कर रहा है. अब ऐसा हर क्वांटिटी के साथ नहीं होता. इन मेनी टाइम्स यू हैव क्रॉस टर्म्स आल्सो. ओके, सो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो हाउ यू कैन राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ? टेल मी. E will become 1 upon 4 pi epsilon naught and q1 by r1 square plus q2 by r2 square. एंड जस्ट अ सेकेंड, इसको भी पैक्ड फॉर्म में ही लिखते हैं ना. सो 1 upon 4 pi epsilon naught summation I qi upon ri square.
ओके, एंड वेक्टर का टेक केयर जरूर रखना होगा. यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज क्यू आई स्क्वायर तो आपने कर दिया, बट फील्ड की डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली इट विल बी. सो आई विल पुट आर आई कैप हियर, आर आई कैप. अब देखो यहां पे एक पहली बार आ गया यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? आर वेक्टर इज इक्वल टू R unit vector is equal to vector upon, and unit vector is always in the increasing direction of the vector. Unit vector is always in the increasing direction of the vector. ये भी लिख लो, unit vector is always in the increasing direction of the vector. Unit vector is always in the increasing direction of the vector. ठीक है. अब इसका एक जरा छोटा सा एग्जांपल, यहां तक क्लियर है? कैन आई गो ऑन द नेक्स्ट? नहीं, बता तो दिया. वेक्टर क्वांटिटी इज when suppose you have position vector, so what is the there? This is a point and this is a point and this is a vector. ये एक वेक्टर है, but vector field tell you about the region, whole of the region. This is only about points. But when you say electric field, around that charge the complete region is defined by the electric field. तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर फील्ड है. ओके, तो वेक्टर फील्ड का क्या मतलब हुआ? वेक्टर फील्ड विल डिफाइन कंप्लीट रीजन. ठीक है, अराउंड द चार्ज. कह सकते हो बिल्कुल, क्योंकि वो हर पॉइंट की प्रॉपर्टी बता रहा है. ठीक है, तो बट ये बेस्ट तरीका ये कहने का है कि टेल्स यू द प्रॉपर्टी ऑफ द रीजन. तो वो मैथमेटिकल वर्ड भी है रीजन, और इन द नेबरहुड, इन द रीजन अराउंड द चार्ज, पूरी प्रॉपर्टीज को बताता है. ठीक है ना? ओके, सो नाउ एक चीज ये देखो, व्हेन आई एम सेइंग दैट यूनिट वेक्टर्स, when I say unit vector is always in the increasing direction, just check this: x, y, z. This is origin, so this is the direction x cap because it is in the increasing direction of x. This is the direction of y cap because it is in the increasing direction of y. This is the direction of z cap because it is in the increasing direction of z. Similarly, let us take spherical polar coordinate system. So this is P point, this is R, theta, phi. So this is R, this is theta, and just draw a perpendicular on the XY plane and put perpendiculars on this. This is perpendicular, this is perpendicular, and join this. This is phi. So r, theta and phi. Now see, this is in the increasing direction of r, so this is r cap. This is in the increasing direction of theta, so it is theta cap. And this is in the increasing direction of phi, so it is, इसको यहाँ पे लेके चले जाओ, parallel vectors can go here. This is phi cap. तीनों perpendicular है. This is phi cap. So r cap is this, r is increasing. Theta cap is this because if you turn this vector in this direction, theta will increase. And phi cap will increase if you pull this vector in this direction, so that is the phi cap. All three are perpendicular. ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर है x cap, y cap, z cap,
यहां पे वही वेक्टर है आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप. इज इट ओके? एंड देन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, टेल मी. दिस इज एक्स, वाई एंड जेड, एंड दिस इज अ पॉइंट P, and just draw a perpendicular on xy plane. This is phi, this is z, and this is rho. So rho cap is in this direction, rho cap is in this direction, phi cap is in this direction, and z cap is in this direction. So these are three vectors in the increasing direction. एक बार किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. So I gave you one line कि unit vectors are always in the increasing direction of that vector, and these are the examples of unit vectors, क्योंकि ये तो सबसे fundamental unit vectors हैं. x cap, y cap, z cap in Cartesian, r cap, theta cap and phi cap in spherical. So this is Cartesian, this is spherical, polar, and this is cylindrical. Cylindrical. यहाँ पे क्या है? Rho, phi and z. Okay? So, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस अभी भी हम इतनी सी नॉलेज से भी कर सकते हैं. नाउ यू कैन ऑल्सो सी दैट सपोज a charge kept, a charge q kept in field capital E, force is equal to question mark. तो क्या हो जाएगा? F will be equal to q E. This will be the force. Obviously ऐसे ही डिराइव भी किया था, तो force is equal to q into E हो गया. ठीक है ना? Let us take some very very simple questions just to begin with. So suppose you have two charges like this. Okay? Two charges are there, and let us take them small q and small q. And this is the center point. So let us take this distance to be 2r or 2d, let me take 2d. Okay? Now tell me, what is the electric field at this point? So because of this charge, अब ध्यान से देखो, डायरेक्शन का काम शुरू हो गया. Because of this charge, electric field will be in this direction. And because of this charge, electric field will be in this direction. So if I put charge Q naught, and let us keep it positive. So what is, and this center point, let me call this A, this as B, and this center point as O. What is electric field at O?
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप कैसे लिखोगे? मैं एक बहुत वेक्टोरिकली दिखा रहा हूं और फिर तो हम बहुत ही कैजुअली उसको यूज करेंगे, ठीक है? सो सपोज आई टेक दिस डायरेक्शन एज एक्स कैप डायरेक्शन। सो electric field at O will be used by superposition principle due to A plus due to B. So this will become A will be equal to KQ by D square x cap plus, because of this, B KQ by D square minus x cap. So that's why it is equal to 0. ठीक है? Now I want to discuss that this was part A. This was part A. Part B is O an equilibrium point? क्या O एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है? तो सिंस फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E एंड दैट इज 0, इट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? रोटेशन कुछ है नहीं, तो जस्ट फोर्स वाला इक्विलिब्रियम है, टॉर्क वाला देखने की जरूरत नहीं है। इज दैट ओके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी, इज इट अ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? तो ये एक क्वेश्चन आ गया कि इज इट अ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? सो फोर्स इज 0, टॉर्क इज 0, दैट इज इक्विलिब्रियम। यहां पे टॉर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली फोर्स। फोर्स इज 0, इट इज इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? सो सपोज you have a particle here, आराम से बता रहा हूं। So if you displace this particle in any of the directions, it will tend to come back to the equilibrium position. This is called stable equilibrium. So if you displace a particle little bit from the equilibrium position, it should try to come back to the original position, then it is stable. Like in the case of simple pendulum, if you displace it, it tries to come back here. If you displace it, it tries to come back here. So that is stable equilibrium. And suppose some particle is kept on this mountain, यहां पे रखा हुआ है तो स्टेबल है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन जैसे ही तुमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, विल इट कम बैक? ठीक है? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए तो वापस आप रिस्टोर कर सको, वो कैरेक्टर है स्टेबल का। और अनस्टेबल ये है कि एक बार बैठे हुए थे तब तक ठीक थे, वहां से जरा सा डिस्प्लेसमेंट मिला तो बस गायब। ठीक है? सो दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देयर इज अनदर एग्जांपल जो कि मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज ऑफ डाइपोल। बट ऐसा तो नहीं है, यू हैव लर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन योर क्लास 12th ऑल्सो। सपोज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ डाइपोल केप्ट लाइक दिस. If you disturb it, it will come back again. If you take it to theta degree, it will come back again. This is a stable equilibrium. But
if this is dipole, it is kept like this. So in this position it is equilibrium. But if you give a little displacement, it will become like this. This is unstable equilibrium. Okay? So this is example of stable equilibrium, this is example of unstable equilibrium. So if you displace it little bit, let us see what will happen. Okay? So this is actually stable equilibrium. See, if you displace it little bit on this side, this will start exerting more force because the distance is decreasing and force is inversely proportional to square of the distance. तो इधर जब तुम लेके जाओगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा, इट विल पुश इन दिस, एंड जैसे ही इसको क्रॉस करके लेफ्ट जाएगा, देन दिस चार्ज विल पुश इट इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल स्टार्ट executing SHM, and I want to know the frequency of that oscillation. Okay, so let us do that. So suppose this is the charge plus Q, this is the charge plus Q, and this charge is kept here Q. I told you Q is stable equilibrium, and if Q is negative, तो जैसे ही आप इसको इधर करोगे, इट विल पुल इट, इट विल नॉट कम बैक. और इस पे एक क्वेश्चन अभी आया था किस एग्जाम में, कि वेदर इट विल डिपेंड, इट इज स्टेबल, जस्ट में इट विल डिपेंड ऑन that it is stable equilibrium or unstable equilibrium, it will depend on charge or not. It will depend on charge. So if your charge is negative, it will be pulled by plus Q. And if it is positive, then SHM will take place, right? So let us displace it little bit. Here you have zero force. But what if I displace it here? This is O, and let us, this distance is x. This distance is x. Now in this position, what will happen if you displace it this side? You have a net force. You have a net force given by, batao? You will have a net force. So KQ by KQ by, what will be this force? 1 upon d plus x square minus 1 upon d minus x ka whole square. I am writing this net force in x cap direction. इसको इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया. ओके? KQQ, right? KQ and capital Q. So it will become, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करो सभी लोग, KQQ d minus x whole square minus d plus x whole square upon d square minus x square का whole square x cap. Okay? So if x was much less than d, I can write d square minus x square is roughly is equal to d square. Is that okay? And in the numerator, KQQ d square plus x square minus 2xd minus d square minus x square minus 2xd upon d to the power 4. This will cancel. It will become minus 4
k q q d नहीं dq into x. So this force is equal to कितना आ गया minus something x, and you know from the spring equation it is minus kx, where k is equal to m omega square for simple harmonic oscillation. I can tell you that the equation is, आप क्लास 11 से जानते हो, d2y by dt2 plus omega square y is equal to 0. And this equation can easily come in this form. देखो f की जगह क्या लिखोगे, m d2x by dt2 is equal to minus 4k qq by dq x. So d2x by dt2 plus 4k qq by m dq x is equal to 0. Now this is frequency square, this is omega square. So omega square will be equal to 4k qq by m dq, and square हटा दो तो this is the frequency of oscillation. तो योर कितने थे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी, बी, एंड सी वॉज, हाँ, और फिर ई लिख लो, इज इक्विलिब्रियम चार्ज डिपेंडेंट, इज स्टेबल और अनस्टेबल equilibrium charge dependent. What is the answer? Yes. यहां पे कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें. If there is any doubt, बताइए भाई. Online students, tell me if there is any doubt. नो डाउट. आवाज तो आ रही है भाई. Yes, sir. Okay. Now, if I take some systems, you will find they are so symmetric. For example, a triangle. This is Q, Q, and Q. And this is the center. Charge is Q here. Charge is Q. Then what will be the force on this charge Q? This is equilateral triangle. A, and A. So you will see that because of this, the force will be in this direction. Yes or no? Because of this charge, force will be in this direction. Same force because of the symmetry.
and because of this charge, force will be in this direction, correct? And if I make a line parallel to the base, then you can see this angle is how much? 30. So this will also become 30. Now let us see. You have three forces like this. One is in this side, one is this side, and one is this side. And just make a coordinate axis. This angle is how much? 30. So this side it will be F cos 30 and this side it will be F sin 30. ये resolution of vector है, I think सबको पता होगा how to resolve vectors. And similarly this is also 30. So this side it is F cos 30 and this side again it is F sin 30. So if you take this axis at x and this axis as y, so force along x is 0 because vectors are equal and opposite. And force along y is F sin 30 into 2 minus F, which is again equal to 0. So that's why this point is also at equilibrium. तो ये भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा. दिस इज एट इक्विलिब्रियम, दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड इफ यू टेक द साइन नेगेटिव देन अगेन इट विल गो फ्रॉम हियर. ठीक है ना? सो बिकॉज यू कैन सी दिस साइड द फोर्सेज आर कैंसिल, सो इफ आई पुश इट along दिस लाइन इट अगेन मे ऑसिलेट सिमिलर तरीके से जैसे पहले ऑसिलेशन हो रहा था, फिर से ऑसिलेशन हो सकता है. ठीक है? तो दिस इज पॉइंट O, सो फोर्स एट O इज इक्वल टू 0. ठीक है? अगेन अगर मैं इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इफ आई टेक अ सिस्टम लाइक दिस, and charges are there Q, 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 Q and Q, and this is the point. And suppose this side is A. What will be the electric field at O? Zero. क्यों? इधर वाला this will cancel this and similarly all of them will cancel. B. Here suppose charge Q is kept. तो FQ is 0 ना? And B is if charge at 1 is removed. If charge at 1 is removed. अगर 1 वाला चार्ज हटा दिया जाए, then what is the field at O? Field at O tell me. No, A square तो नहीं होगा. We have to take this distance, which is R. वेट मैं बता रहा हूँ. सो अभी के लिए लिख देता हूँ. आई विल हैव टू चेक. सो E at O विल बी, क्योंकि क्या हो रहा है,
इसकी वजह से field were cancelling here. So if you remove this, then this field will not cancel here, and that will give. Others will be cancelling in the manner they were doing before. So it is KQ by R square. And now let us check the angle. So if this is like this was A, and this angle is how much? 6 sides are there. So this is 60. And then ये दोनों कितना हो जाएंगे? ये दोनों एंगल तो इक्वल है ही because of isosceles triangle. So ये भी 60 60 हो जाएगा. Okay? So this will become A and A. So hence this will become R is equal to A. ठीक है? अगर एक्स वाई में देखना जाएंगे तो कुछ अलग ही फील्ड आएगा क्योंकि फिर There से will be a cos 30 and sin 30 then. And क्या? they are in negative. क्या चीज? If we are writing it as a vector, हाँ वेक्टर तो फिर तो रिजॉल्व करना पड़ेगा. I have just written KQ by A square, and this field will be in this direction. Please see this. This field will be in this direction. If you want to resolve, you can always resolve in X and Y. Okay? So resolution of vector is, everybody should remember, if this is a vector A and this is theta, so this direction is A cos theta and this direction is A sin theta. This is resolution of the vector. तो कहीं भी वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो आप एक्सिस बना के यू कैन ऑलवेज रिजॉल्व. ठीक है? लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. यहां तक क्लियर है? टेल मी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, क्लियर है? Yes, sir. डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन ना, जिधर मैंने बना दिया. Direction, if you want to write, you just mark this as r cap vector, r cap, and put a direction here, r cap. But if you really want to resolve it, then you can do it like this. This is suppose x-axis. Just make an axis here, like this. And this is your vector. This is your electric field. Take this angle as theta. This side it will be E cos theta, and this side it will be E sin theta. So this is how you will resolve it. Theta you already know. Theta कितना होगा? 30 degree. So just take cos 30 and sin 30. Okay? ओके चलो ये क्वेश्चन जरा करके दिखाओ सभी लोग. This is the question.
O पे फोर्स लगाना है एंड व्हाट इज द चार्ज देयर माइनस Q1. तो सुपर पोजिशन से व्हाट विल हैपन, इट विल बी सम ऑफ फोर्स ड्यू टू Q3 एंड फोर्स ड्यू टू Q2. ठीक है, तो लेट अस ट्राई. सबसे पहले देखो व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू Q2. It will be this direction. This is force on 1 due to 2. Please see this. And due to Q3, it will be this direction, repulsion. This is force on 1 due to 3. And this angle is already given to be theta in the question. So this angle will be always, this is also theta. So let me make the vectors. This is F12 and this is F13. Just a second. ये इधर वाला एंगल बनेगा, सॉरी. This will be, this is theta and let me make this only theta, sorry. Not this as theta. This is theta. Vertically opposite angle. So what will happen? So this angle is theta. This is F12, this is F13. So इस F13 को रिजॉल्व कर लो. This is F13 cos theta and this is F13 sin theta. So force along x direction will be F12 plus F13 sin theta. And how much? X cap, correct? And force along y is equal to minus, नहीं माइनस नहीं लिखता हूं मैं लिखूंगा F13 cos theta minus y cap. तो नेट फोर्स हो जाएगा F is equal to f of x plus f of y, and this is equal to f12 plus f13 sin theta x cap minus f13 cos theta y cap. Now what is this? F12, it is K Q1 Q2 by B square. Don't take sign here. Sign always we will consider in the direction, then we will not take any sign. ये बात ध्यान रखना, ये नहीं कि दो दो बार कर लो. I am considering sign to get the direction, whether it is attraction or it is repulsion. So I will take only one time. F12 and F13 will be given by K Q1 Q3 by A square. Just इसमें substitute कर दो. So write it in note that take sign to see the direction. Bas, that's it. Once see attraction, repulsion, that will give you the direction, then don't take any sign. Is it clear? सर वो F13 का डायरेक्शन फिर से बताएंगे, वो समझा नहीं.
F13 में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये तो इधर रिपल्शन भागेगा ना। हाँ सर। डायरेक्शन में क्या दिक्कत है बताइए। ये लाइन है, इसी लाइन से ये दूर भागना है इसको, तो ये बना लिया डायरेक्शन मैंने। अब ये थीटा गिवन है तो ये थीटा हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां पे समझ लो, दिस इज F13, इसका कॉस इधर आ जाएगा, साइन इधर आ जाएगा। यस सर। Now you have two vectors in this direction, add them, one vector in this direction. So I have written it as fx and fy. Okay? What was not clear? सर वो लग रहा था कि Q3 में ऊपर जाएगा वो F13 क्योंकि वहाँ पे इंक्रीजिंग है ना, तो Increasing means? आपने बोला कि जिस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है वहाँ पे वो डायरेक्शन है भाई like, अच्छा चलो ये मैंने नहीं लिखवाया। Like charges repel and unlike charges attract. Yes or no? So ये दोनों के चार्ज सेम है या अलग अलग है? सेम है, तो इट विल रिपेल। रिपेल का मतलब इसको दूर भागना है। ओके? minus Q3 is here and minus Q1 is here. So if you want to see minus Q1, it will try to go this side. Any other question? Okay, then from here we will continue. Thank you so much.